हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ मेगा क्विज 4 का डिटेल्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो हियर टुडे विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस, अनदर 10 क्वेश्चन। एंड अगर आप ऐसे ही क्विज देना चाहते हो मेगा क्विज, या फिर डेली बेसिस में पेपर 1 पेपर 2 का प्रैक्टिस करना चाहते हो, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, देन आप हम लोग को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 11 इज गेट 2013 क्वेश्चन, ओके, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंकरेंट प्रोसेस एंड सेमाफोर। सो आई विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट, सो कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज कंसीडर ए वर्चुअल मेमोरी विथ FIFO प्लेस रिप्लेसमेंट पॉलिसी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज हो रहा है यहाँ पर। फॉर एन आर्बिट्ररी पेज एक्सेस पैटर्न, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी विल ऑलवेज डिक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। अगर ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर आपका जो मेन मेमोरी में नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स है, अगर इसको इंक्रीज कर दो तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो अक्कर होगा वो लेस हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ये हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि पेज, यहाँ पर पेज फॉल्ट क्या होता है, जब आप कोई भी पेज सर्च करते हो एंड वो वाला पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, पेज फॉल्ट अकर होता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर पेज नंबर ऑफ पेजेस अगर बढ़ा देते हो तो एक चांस आपका बढ़ जाता है कि आपका जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है वो डिक्रीज हो जाए। लेकिन ऑल द केसेस में ऑलवेज, जो ऑलवेज दिया है, समटाइम्स इट डिक्रीजेस बट ऑलवेज डिक्रीजेस, ये रॉन्ग है। ठीक है, समटाइम डिक्रीज होता है बट समटाइम्स ये क्या होता है, इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, कैसे, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करें तो इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पर FIFO यूज करके ये मैं बना रही हूँ। यहाँ पर सेम क्वेश्चन गिवन है, जहां पर कि हम देखेंगे जब आपका पेज नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स आप मेन मेमोरी में बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर लेते हो, तभी भी आपका नंबर ऑफ जो पेज फॉल्ट है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सो FIFO इज यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज यूज्ड। सो whenever one is coming here, it is one page fault. Okay, 1 2, this is also page fault because we are searching 1 and 1 is not present here, so here it is a replacement. Okay, now 3 will come, so 1 2 3 will be there, so this is also a page fault. These are page fault. Okay, page faults. Now when 4 is coming here, what we should do, we should replace the first whatever element comes first. Okay, so here 1 came first, so you just replace 1 with this. So here also we have done a page replacement. Okay, so this is also a page fault. Again 1 is here, so 1 should be replaced. 1 should be replaced with whatever came first. So here 1 should be replaced. Okay, now 2 comes here. 2 अभी देखो कौन सा प्रोसेस पहले आया हुआ है, 4 अभी आया है, 1 भी अभी आया है, 3 पहले से है। ठीक है, तो 3 को रिप्लेस करो, 3 will be replaced in this case. Then again this is also a replacement. Okay, now you can check here. Now you can check here, 5 is here. Okay, so whatever process comes first, you have to cross that one and you have to put this one also. 4 is here, from फर्स्ट से यहाँ पर 4 है। ठीक है, सो यहाँ पर 5 यहाँ पर रिप्लेस करोगे एंड 1 2 as it is. अभी 1 आ रहे तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो देर विल नॉट बी एनी पेज रिप्लेसमेंट। ओके, नाउ 2, अभी 2 आ गया, 2 आने पर अभी देखो 2 यहाँ पर प्रेजेंट हो, सो देर विल नॉट बी एनी पेज रिप्लेसमेंट इन दिस 2 केसेस. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज 3 हियर. सो व्हाट एवर प्रोसेस केम फर्स्ट, यहाँ पर कौन सा है, 1 देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 यहाँ से, 5 यहाँ से. ठीक है, so कौन सा फर्स्ट आया है, 1. So here you will replace 1 with 3. Now 2 and 5 will be as it is, and here also one page replacement occur. Okay, page fault occur. So now what will be the what is the element here, it is 4. Okay, so here we are not having 4 also. So what you will do, you will replace 4 with whatever element came first. So 2 is here. Okay, 3 is here, 5 is here, so this is first in. Okay, so you have to replace this one and this will be as it is, and 4 3 5 will be as it is. There will not be any replacement for this element 5. Okay,
So now the number of page fault is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here the number of page fault is 9. Now we will see whenever we are increasing the number of page frames here inside the main memory, whether our page faults are increasing or decreasing. Okay, so here in this case we will see what is happening here. So 1, 1, 2, 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4 till this point 4 page faults. Okay, here in memory these pages are not present, so this is also a page fault. Okay, now we have to see when 1 comes, if 1 is there, this will be not replaced. Okay, whenever 2 is coming, this one also not replaced because already 2 is here and 1 is here. Okay, and now 5, it's term of 5, so whatever on page came first, that will be replaced, so this one will be replaced. 1 is first in. Okay, so 5, 2, 3 and 4. Now again 1 is coming here, so which one will be replaced? This one. 1, 5, 3 and 4. Okay, now 2 comes here, which one will be replaced? This 3 will be replaced, so 2, 4, 1, 5. Then here 3 comes. Okay, so whatever process which come here, यहाँ पर देखो 4 जो है वो पहले आया हुआ है, so इसको replace करोगे. ठीक है, 3, 2, 1 and 5. Now the term of 5, so here everything is replaced, I think so. Okay, here 1 is replaced, 2 is already present, so here 1 is replaced, 2 is everything is replaced. Again now see, it is the term of 4. Now which one will be replaced? See, this one will be replaced, 5. So 4, 1, 2, 3. Now 5 is there, so which one will be replaced here? This one. So 5 will be replaced and this will be the answer. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here see, the number of page fault is increased when we increase the number of what? Number of page frames. Also the number of page fault is increased. So this case is known as Baladi's anomaly. ठीक है, what is Baladi's anomaly? Whenever you are increasing the number of frames, number of page frames inside the main memory, also the number of page fault is increasing. Okay, so here you can't say always increasing. Okay, sometimes it will be decreasing. So sometime increase and sometime decrease will be the correct answer for this question. Okay. Now the next question is, relational algebra is a dash query language. So we all know that relational algebra is a procedural query language. Okay, so answer for this question is option C. And next, what are the potential problems when a DBMS execution multiple transaction? Okay, concurrency execution, what happens? What are the potential problems in that case? So here the first option is phantom problem, the dirty read problem and unrepeatable read problem. So here all these problems occurs in this case. Okay, so we'll discuss one by one what are these problems here. Okay, so here we will discuss all the three options. Okay, so option A was phantom problem. What is phantom problem in DBMS? Suppose two transactions are here, T1 and T2 in concurrency control management. Okay, so here what is happening? See, here one table is given, one relation is given. Okay, and here I am selecting some rows from the employee table by using select star from employee who has salary less than greater than equal to 300. So here I'll get these two. Here I'll get two rows. Okay, two rows here I'll get, and after this one more query is written in transaction T2. Okay, here what is happening? Insert into employee value E3 Surya and 300. Here some other person is doing like here it is called interleaving. Okay, here it is called interleaving. Here what is happening? Some other person is writing inside the same table. Okay, same employee table. So this employee table is here is entering some values. For after this again I am writing, after the finishing this statement I am writing again select star from here, select star from employee. Okay, select star from employee who has salary greater than 300. So in this case what is happening? Again I am getting three rows here. Okay,
for the same queries in this transaction I am getting different values at different time. So this problem is called what? Phantom problem. Why such problem happen? Because we are working on the same data. Okay, so same data, two things are happening here. If I have done this one and after this if I will do this one, then there will not be any problem. Okay, so this problem is known as phantom problem. The next one is the dirty read problem. So in this case what is happening, two transactions are here. Okay, and dirty read problem, we know in concurrency transaction management three problems are there: write conflict, write read conflict, and read write conflict. Okay, so the dirty read problem is nothing but the write read conflict. Okay, see what is happening here. R is reading some data. Suppose R is reading the data 1000. Initially the value of A equal to some value is given 1000. Okay, and R is reading that 1000, and this 1000 is I am taking a difference of what? 50. So here the remaining value will be 950. Okay, and will write R will write the value here. So write operation will take a what? It will make the 1000 as 950. Okay, now what is happening here? R of A is reading the data. So here it will read the data 950, and it will make some operation here, and it will do what? It will take 50% of this value. Okay, this will be 425, and it will add this 425 to this answer. So 950 plus 425, the value will be 5 7 13. Okay, so 1375 is the new answer, and which will be written to the initial data, that is 1375. Okay, यहाँ पर क्या हुआ देखो, एक वैल्यू इनिशियली था जिसमें कि इसने कुछ रीड किया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया ट्रांजैक्शन 1, एंड यहाँ पर ये वो वैल्यू को यहाँ पर राइट कर दिया. ठीक है, हार्ड डिस्क में राइट कर दिया. देन इसके बाद क्या हुआ, हार्ड डिस्क में जो वैल्यू था ट्रांजैक्शन T2, इसको लेके यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एंड अगेन न्यू वैल्यू को यहाँ पर राइट कर दिया. ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ, जो बी वेरिएबल है ये सेम डाटा को यहाँ से रीड किया. ठीक है, 1375 यहाँ पर रीड किया. देन फॉर सम कुछ प्रॉब्लम ऐसे ऑकर हुआ, जैसे कि मतलब शटडाउन हो गया, क्या हुआ पता नहीं. कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ये क्या किया, यहाँ से ये ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है. ठीक है, फेल होने के बाद क्या होगा, ये रोल बैक करेगा. ठीक है, रोल बैक करेगा मतलब जो पहले से वैल्यू था वो वैल्यू ये इसको असाइन कर देगा. तो फिर से हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर ये जो रीड हुआ था 1000, ये फिर से ये वैल्यू को कट करके यहाँ पर 1000 कर लेगा. ठीक है, जो भी वैल्यू इनिशियली हुआ था वो सारे काम को ये रोल बैक करते जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, ये फिर से इनिशियल वैल्यू इसका क्या हुआ, 1000 हो गया. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दिस होल अपडेशन, ये पूरा अपडेशन क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा. मतलब इनवैलिड हो जाएगा मतलब ये पूरा अपडेशन इरेज हो जाएगा. ठीक है, ऐसे लगेगा कि ट्रांजैक्शन T2 हैज नॉट डन एनीथिंग हियर. ओके, बट यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था. सो दिस प्रॉब्लम हैपेंड बिकॉज ऑफ ए राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. ओके, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए डार्टी रीड प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है, एंड इसके लिए सॉल्यूशन भी है. अगर आप किसी भी अनकमिटेड, यहाँ पर कमिट अगर हो जाता, कमिट होने के बाद रोल बैक होता, तो यहाँ पर क्या होता, वैल्यूज विल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर कमिट. ओके, व्हाट एवर वैल्यू इज प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क दैट विल बी रिमेनिंग सेम. ओके, बट कमिट के पहले अगर आप कुछ डाटा को रीड कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम, डाटी रीड प्रॉब्लम आपको अकर होगा. ठीक है, कमिट के बाद अगर रोल बैक होता या फिर कमिट के बाद यू आर रीडिंग दिस डाटा, देन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अनरिपीटेबल रीड. अनरिपीटेबल रीड में क्या हो रहा है, यहाँ पर रीड है, यहाँ पर पहले इनिशियल वैल्यू 1000 था, 1000 रीड हुआ. यहाँ पर रीड होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, T2 also read the data as 1000. Then T2 made something here and just take a difference of 500, and remaining A is 500, and this 500 value is written here. Okay, now what is happening, this value is written here. Now again T1 is reading the data again. Okay, now here it will read the data as 500 because already the data in the hard disk written as 500. Okay, so for the same transaction it is reading the value for twice. Okay, different value it is reading. So this happened because of a read write conflict here. So this is called as unrepeatable read problem. Okay, understood? The next question here is, the dash clause
allows us to select only those rows in the result relation of the TR's clause that satisfy a specific predicate. Okay, so here the answer will be option A, which is where and from. Okay, so here where selects the rows on a particular condition. So in a particular condition in the query we are using in the predicate part where clause. Okay, and from is given when the relation which involves the operation. Okay, so from is given from something we are writing. So from is given the relation which involves from table, from some table we are writing. Okay, table in the sense the relation. Okay, which involves the operation. So answer for this will be where and from. Okay, now the next question here is 16. Question number 16. Consider the following tree if the post order traversal gives here a b minus c d plus and star and plus. Okay, so here we have to find what are this label represent. Okay, यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है, हमें बताना है कि 1 2 3 4 5 6 7 का वैल्यू क्या है. So how does a post order works here? See, if you are having this tree, this nodes like this one is nothing but pre-order, this one will be in order, and this one will be post order. This point will be post order. So for every tree you are having this like this values. Okay, so here what I am doing, every time what I am writing like this, whenever I am coming from the starting point to the ending point, whenever I am coming at this point, I am writing the post order here. Okay, so what is the post order? The first value is A. So here 4 will be A. The next post order value, this is in order. Okay, this side is post order, this side is post order, this right side part is post order. Okay, so whenever you will touch this one by traversing, when you are traversing like this, whenever you are coming this place, the next value is B. So here fifth value is B. Then again you will go like this. So here it will be minus. Okay, here you will get minus sign, and again when you will reach the post order, you will reach the post order here. Okay, at this point. So this value will be what? C. And again next you will traverse like this. Here there is no post order, and again here it is a post order. The value will be D after C. Okay, now we will go by traversing like this. So this value will be what? Star, and again the next value will be plus. So what is A? 1 2 3 4 5 6 plus minus star A B C D. So okay, so this option will be correct. Whenever you will get this answer, that option is correct one. So the next question here is question number 17. A binary tree in which every non-leaf node has non-empty left and right subtree is called as a strict binary tree. Here there is nothing but here it is the definition of strict binary tree. Okay, so here in this case, if we are having 10 leaves, so how many nodes we are having in the strict binary tree they are asking. Okay, if you are having 10 leaf nodes, then how many nodes, how many total number of nodes we are having in this strict binary tree they are asking. Okay, so cannot have more than 19 nodes, has exactly 19 nodes, has exactly 17 nodes, and cannot have more than 17 nodes. Here the answer will be this one, because the formula for strict binary tree, number of nodes you can get if any tree has n leaf nodes. अगर आपके पास n leaf है, then for strict binary tree it has 2n minus 1 nodes. Total number of nodes will be 2n minus 1. Okay, so here n value is given as 10. So this will be 2 into 10 minus 1, which is nothing but 19 nodes. So here I have made the exact strict binary tree for this question. Okay, so here we are having 10 nodes. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 leaf nodes. Okay, so 10 leaves को लेके हम कितना टोटल नोड हमारा हो सकता है एक ट्री में? दिस नंबर इज 19. Okay, and here what they are asking, strict binary tree. So what is a strict binary tree other than leaf node? ठीक है, ये लीफ नोड को छोड़ के, इतना जो लीफ नोड है इनको छोड़ के, वॉट एवर नॉन लीफ नोड यू आर हैविंग, एवरी नॉन लीफ नोड हैव कंप्लीट left subtree and right subtree. See here it is having both left and right, it is also having left and right, it is also having left right left right left right. Okay, if one node will be like this, if it is given like this, then it is not a strict binary tree, because here only right node is present and left node is not present. Okay, समझ में आया strict binary tree क्या है, एंड यहाँ पर आंसर क्या है? 17. फॉर्मूला ये आप याद रख सकते हो तो रख लो. ठीक है,
Here the next question is the concept of order big O, okay, is important because it can be used to decide the best algorithm that solves a given problem. It is absolutely correct. Okay, big O is used to decide the best algorithm, and also it determines the maximum size of a problem that can be solved in a given system in a given time. ठीक है, so कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा, that will be decided from big O algorithm, big O. Okay, so here these two are correct. Okay, it is the lower bound of the growth, it is not the lower bound. Okay, यहाँ पर ये upper bound है. Understood? So answer for this two this question number 8 is option D, both A and B. Here the next question is question number 19. Here a grammar is given from S to SA or B. Which of the following is true? There will be a SR conflict. SR conflict मतलब shift reduce conflict. Okay, shift reduce conflict passing, or there will be a reduce conflict, or there will be a both conflict, or there will be there will not be any conflict. Okay, so answer for this will be what? We have to find out the LR0 items here. What are the LR0 items? So how to find these items? Let's do the procedure like this. Okay, suppose you are having S2 dot SA. So here you have to make a augmented grammar like this. S dash will be S dash from dot S. Okay, so this is called as augmented grammar. Augmented grammar you have to make like this to make आपको अगर LR0 item बनाना है. ठीक है, so how to make LR0 items? Just see here. Here what we are having, S dash to dot S. Okay, so whenever this dot comes after this, take this initial value. Okay, take this value whether it is when this value is initial. So यहाँ से S दिया गया है. ठीक है, so S से आपको क्या मिल रहा है? From S you are getting dot SA. Everywhere you have to put this dot symbol. Okay, this is nothing but LR0 items. Okay, these items are called LR0 items. Now from S again you are getting B also. Okay, dot B you have to write like this one. First we made this one augmented grammar. Augmented grammar is nothing but initialize one more variable, and from this one you have to take the initial grammar. Okay, so S dash to dot S, and again यहाँ पर क्या कर रहे हैं, S2 क्या मिल रहा है आपको, डॉट SA एंड डॉट B. ठीक है, ये तीनों मिलके क्या हो गया, LR0 items. Okay, now we have to check what is the shift operation and what is the reduce operation performing here. Okay, so whenever you will get like this, see if dot B is given, when you will give B here, you will get this one as B dot. Okay, B dot. So here if your dot comes after all the possible variables, then this one is called as reduced. Okay, this value is reduced. ठीक है, और अगर आपको ऐसे मिल रहा है, ठीक है, एस के बाद आपको क्या हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, इसके बाद फिर से आपका शिफ्ट ऑपरेशन होगा. सो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट. ठीक है, सो रेड्यूस शिफ्ट क्लियर हुआ. यहाँ पर देखो इफ आई विल प्रोवाइड एस, यहाँ पर अगर मैं एस देती हूँ तो व्हाट आई विल गेट एस डैश टू एस डॉट. ठीक है, बट जब भी आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्शन में ये इट सीम्स लाइक व्हाट, it seems like it is a, whenever I am giving S here, I can either go to S dash to S dot. Okay, or else S अगर दूँ तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, S to S dot A. ठीक है, if I will provide S, I can go to this one or this one. Okay, so here this is called a what, if it seems like a reduced operation. Okay, it seems like reduced, but it is not reduced. Okay, here and here it is a shift operation, because again we can shift this value to this one and this is reduced. But for exception cases, for augmented grammar, you will not take this one as shift operation. Okay, and again if I will provide B here, if I will provide B, I can get, this is my state 1 and this is state 2 and this will be state 3. Okay, state 3. Here if I will provide B, I can go from S to B dot. Okay, and this is a reduced function. Okay, here it is reduced, and here what is happening, this is not shift, it seems like shift, but this operation is not shift here. Okay, again if I will provide A, I will go to a state I4. Okay, and it will be S2 SA dot. Again this is
only what reduced. Here it is only reduced, here it is shift and reduced, but this shift operation does not matter because this is the augmented grammar. Okay, अगर यहाँ पर ऐसे कुछ होता है s2 sa डॉट या फिर sb डॉट ऐसे कुछ आ जाता तो ये क्या होता है, शिफ्ट रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे कुछ केस नहीं आ रहा है, ये सेम हो रहा है कि ये शिफ्ट रेड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट है, बट दिस इज नॉट शिफ्ट रेड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एंड दिस LR0 आइटम्स, इन दिस आइटम्स वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, so answer for this question will be option D. So here the next question is, consider the following expression x equal to a star b minus c star d plus e. Okay, here we have to find for generating the target code how many registers will be required apart from the a. ठीक है, accumulator को छोड़ के बाकी कितना आपको रजिस्टर चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, ठीक है। So here we can write the code like this, move a, accumulator में a को रखो, ठीक है, then multiply b. What does it mean multiply b? It will multiply the value of accumulator into b itself. Okay, it will multiply these two and then it will store the result inside the accumulator. Okay, now the accumulator value will contain a into b. Okay, now take a register, move register r1, register फर्स्ट रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो R1 पे आपको क्या स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू स्टोर करना है, जो भी A स्टार B था, नाउ इट इज प्रेजेंट इनसाइड रजिस्टर 1। ओके, A स्टार B। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ मूव A, एक्यूमुलेटर पे कौन सा वैल्यू रखना है, C, ठीक है, देन मल्टीप्लाई D, ठीक है। मल्टीप्लाई D में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर वैल्यू विल बी A into D, ठीक है, A में क्या है C, so C into D will be stored in accumulator. Now what you have to do, now you have to subtract this value from this one. So now subtract R1, रजिस्टर R1 में क्या है A स्टार B एंड एक्यूमुलेटर में अभी करेंटली क्या प्रेजेंट है, C स्टार D, ठीक है। R1 A, ठीक है, A में जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करो R1 से, ठीक है, रजिस्टर 1 से। नाउ क्या करना है, अभी ये सब्ट्रैक्ट होके ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, A में, ठीक है। A में अभी क्या है, A स्टार B माइनस C स्टार D, यहाँ पर अभी A में स्टोर हो गया है रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर का वैल्यू हम माइनस करके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर लिए हैं। नाउ क्या होगा, ऐड E करने से क्या होगा, इसका मतलब है कि A इक्वल टू A प्लस E। ऐड E ऐसे कुछ लिखने से, सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखने से क्या होता है, जो भी वैल्यू आपका एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है उसके साथ आप करेंटली जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ये यहाँ पे हैपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। So how many registers extra you need, single register. So answer for this question will be option A, which is 1. So thank you so much guys for watching this video.